Career Success Tutorial. Today I am going to discuss about the objective question of database management system which is asked in 4th semester in 2020 in a special exam. So moving towards our first question. Our first question is a collection of related डेटा के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन डी मेटा डेटा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. DBMS manages interactions between database and option A user, option B client, option C end user, option D a stakeholder. So option C is correct. DBMS manages interaction between database and end user. End user is the final user that interact with the database. So option C is correct. Next question. Database is generally called option A system centered, option B user centered, option C company centered, option D data centered. So option B is correct. Database is generally called user centered. Perspective क्या है? User is always right. Suppose if there is a problem with use of the system is problem, not the user. That's why database is generally called user centered. Next question. Restrictions placed on data. Option A relation, option B attribute, option C parameter, option D constraint. So option D is correct. Constraint is the restriction placed on the data. So option D is correct. Attribute generally describe the characteristic and relation generally describe the association. So option D is correct. Next question. IMS stand for. IMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन मास्टरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन सिस्टम, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. IMS स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या यूज है? सपोज वी आर वर्किंग ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट and we need to store and manage the large amount of data. So IMS is developed to manage the large amount of data for complex project. Next question. Object is the relationship with. Object का relationship किसके साथ होता है? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी एंटिटी, ऑप्शन डी constraints. So option C is correct. Object is the relationship with entity. Next question. In which normal form a composite attribute is converted to individual attribute? इनमें से किस नॉर्मल फॉर्म में कंपोजिट एट्रीब्यूट को कन्वर्ट किया जाता है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में? ऑप्शन ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट and in first normal form it is used to eliminate the duplicate information. So option A is correct. Next question. One to many or many to many relationship must option A be in second enough, option B be in third enough, option C have a single attribute key, option D have a composite key. So option D is correct. In one to many or many to many relationship must be have a
कंपोजिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल डिपेंडेंसी आर टाइप्स ऑफ constraints that are based on ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की रिविजिटेड, ऑप्शन सी सुपरसेट की, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Functional dependency are types of constraints that are based on key. Key is a basic element which needed for the constraints. So option A is correct. Next question. Table in second NF normal form. Option A eliminates all hidden dependency. Option B eliminates insertion dependency. Option C have a composite key. Option D have all non key field depends on the whole primary key. So option A is correct. In second normal form, it eliminates all the hidden dependency. If we talking about the any relation in second NF is also in first NF and no partial dependency on any column in primary key, so option D is incorrect. Option A is correct option. Next question. Which normal form simplifies and ensure there are minimized data aggregates and repetitive? इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो सिंप्लीफाइज एंड मिनिमाइज डेटा को देता है? ऑप्शन ए 1NF, ऑप्शन बी सेकेंड NF, ऑप्शन सी थर्ड NF, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन. सो ऑप्शन सी इज correct. In third normal form, it simplifies and ensure there are the minimized data aggregative and repetitive. So next question. Which normal form has a relation that process data on individual entity? इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो प्रोसेस डेटा को इंडिविजुअल एंटिटी में रखता है? ऑप्शन ए 3NF, ऑप्शन बी सेकेंड NF, ऑप्शन सी फर्स्ट NF, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. तो फोर्थ NF फॉर्म में रिलेशन को प्रोसेस डेटा को इंडिविजुअल एंटिटी में रखा जाता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज इसमें फोर्थ NF नहीं दिया गया है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डज डिफाइन अ व्यू और व्यू ऑफ द डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर यूजर? ऑप्शन ए इंटरनल स्कीमा, ऑप्शन बी कंसेप्चुअल स्कीमा, ऑप्शन सी फिजिकल स्कीमा, ऑप्शन डी external schema. So option D is correct. External schema does define a view or view of the database for particular user. It can provide access to the table that are managed on any SQL server, just like MySQL, Oracle, database, etc. So option D is correct. It uses for particular user. Next question. Which of the following is an attribute that can uniquely identify a row in a table? तो uniquely identify किसी भी टेबल में कौन करता है? तो प्राइमरी की. सो ऑप्शन ए सेकेंडरी की, ऑप्शन बी कैंडिडेट की, ऑप्शन सी फॉरेन की, ऑप्शन डी अल्टरनेट की. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट because candidate key and primary key both uniquely identify a row in a table. So option B is correct. Next question. Which of the following are the process of selecting data storage and database? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो डेटा स्टोरेज को सिलेक्ट करने में मदद करता है? ऑप्शन ए
logical database, option B physical database, option C testing, option D selecting. So option B is correct. Physical database design are the process of selecting data storage and database. Option B is correct. Next question. Which of the following does refer to correctness and completeness of data? Option A data security, option B data constraints, option C data independency, option D data integrity. So option D is correct. Data integrity does refers to correctness and completeness of the data. Next question. The relationship between department and company is. डिपार्टमेंट और कंपनी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? ऑप्शन ए 1 to 1, ऑप्शन बी 1 to many, ऑप्शन सी many to many, ऑप्शन डी many to 1. So correct option is B 1 to many. The relationship between department and company is 1 to many. For example, one department may have enrolled in many companies. So option B is correct. Next question. Which joint operation are SQL Server default join? Option A outer, option B inner, option C equi, option D none of the mentioned. So default zone is known as inner zone. So option B is correct. Inner joint operation are SQL Server default join. Next question. It is essential used to search for pattern in target string. Option A like predicate, option B null predicate, option C in predicate, option D out predicate. So option A is correct. Like predicate. Like predicate is like matches the pattern with the query. So option A is correct. Next question. This is our last question. So which one is the combination of two or more attribute used as a primary key? इनमें से कौन सा की है जो दो और दो से अधिक एट्रीब्यूट को मिलके प्राइमरी की तरह यूज होता है? ऑप्शन ए कंपोजिट की, ऑप्शन बी अल्टरनेट की, ऑप्शन सी कैंडिडेट की, ऑप्शन डी फॉरेन की. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कंपोजिट की. कंपोजिट की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट यूज्ड एज अ प्राइमरी की. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Please follow our Facebook and Instagram too. The link is also mentioned in description box. Thanks again.